नमस्ते दोस्तों, सूर्यनयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, राइट? नॉट द प्रॉब्लम्स, वी सॉ द कॉन्सेप्ट्स। अभी इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। लेट अस सी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो वी हैव अ सेक्शन समथिंग लाइक दिस। एक बार है विच इज़ अ सर्कुलर बार, ओके, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। और हमें क्या हो रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है P, दैट इज़ एक्शियल फोर्स P, ओके, एक्शियल फोर्स P लग रहा है विच इज़ इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, ओके। इसका डायमीटर है, डाया इज इक्वल टू 0.02 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ओके। उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² इज गिवन। अभी हमें क्या क्या निकालना है? पहली चीज़ तो हमें स्ट्रेस निकालना है, सेकंड वी हैव टू फाइंड स्ट्रेन, एंड थर्ड वी हैव टू फाइंड द इलोंगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इलोंगेशन? इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल टू व्हाट, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमने पढ़ा था पहले, तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। सो व्हाट इज़ योर गिवन डेटा? गिवन डेटा इज एल इज इक्वल टू 1.5 मीटर, दैट इज़ 1500 mm में लिख ले रहे हैं क्योंकि हमारा स्ट्रेस इलोंगेशन सब कुछ mm में है, न्यूटन पर mm² एंड ऑल दोज थिंग्स। d दैट इज़ डायमीटर इज़ 0.02 मीटर, मतलब इसको mm में लिखेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1000, दैट इज़ इक्वल टू mm, दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट 20 mm. तो व्हाट विल बी योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? दैट इज़ π/4 d², π/4 into 20 square, that will come out to be 100 pi mm², ओके। और हमें क्या दिया हुआ है? P इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, दैट इज़ 20 × 10⁻³ न्यूटन। और हमें क्या दिया हुआ है? E इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², दैट इज़ गिवन। तो सॉल्यूशन में पहले फाइंड करते हैं स्ट्रेस, विच इज़ आस्क्ड व्हाट इज स्ट्रेस। द स्ट्रेस इज नथिंग बट एक्सियल फोर्स अपॉन एरिया। सो व्हाट इज योर एक्सियल फोर्स? 20 × 10⁻³ दैट इज़ योर न्यूटन। एंड व्हाट इज़ योर एरिया? एरिया वी हैव फाउंड आउट, दैट इज़ 100 पाई। अगर 100 पाई है तो 20 इंटू इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट 63.66 न्यूटन पर mm², okay, or you can also write as 63.66 megapascals, okay। अगर कैसे आया मेगापास्कल्स, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। यू कैन गो एंड वॉच द लास्ट लेक्चर इफ़ यू आर नॉट सीइंग। स्ट्रेन हमें क्या है? व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज़ नथिंग बट चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो व्हाट इज़ द चेंज इन लेंथ हमें पता नहीं है, वी डोंट नो चेंज इन लेंथ। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट चेंज इन लेंथ. So how can we find out change in length? We know, see, what is stress is equal to मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ से हमें अभी डेल्टा एल का फॉर्मूला आगे से डिराइव करके याद रख लेना है। व्हाट इज़ योर स्ट्रेन? स्ट्रेन इज़ नथिंग बट सिग्मा, दैट इज स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज एक्शियल फोर्स अपॉन एरिया, एंड योर ई, राइट? Okay, so that means strain is nothing but P upon AE. What is strain? Strain is nothing but you can write delta L upon L, that is equal to P by AE. Okay, यहाँ से तुम strain निकाल ले सकते हो, that is 20 × 10⁻³ upon 100 pi into 2 × 10⁵ अगर निकालोगे तो you'll get the answer as 0.000318 mm. Sorry, not mm. Strain will not have any unit, okay, because it is nothing but length upon length. अच्छा, so to get the formula for delta L, we can also write strain as delta L upon L, change in length upon original length. So therefore delta L is equal to PL upon AE. So this formula is very important for you. So I think all of you should remember this formula as a standard formula. So it's going to be very useful for you. So what is P? 20 × 10⁻³ into L was 1.5 meter, that is 1500 mm,
upon what is area is 100 pi into E 2 into 10 to the power 5. If you solve this, you should get the answer as 0.478 mm. Okay, so that is your answer. That was your question 1. So what did you learn here? Nothing, just the application. Delta L is equal to PL upon AE. How did it came? If you don't even remember, you know that stress is directly proportional to strain, therefore multiplied by stress is equal to modulus of elasticity into strain. इस formula से we can derive this. Okay, let us go on to the next problem. Question number 2. तो question 2 में क्या सीन हो रहा है? Find, the question is like, find the minimum dia of steel bar which is used to carry a load of 4000 Newton if the stress in the bar is not if the stress in the bar should not exceed or does not exceed 95 Newton per mm square. Okay, so the question given, what is the given? See, you can read the question again. Find the minimum diameter of steel bar which is used to carry a load of 4000 Newton. So P is given. So what is given? P is 4000 Newton. Okay, then if the stress in the bar does not exceed 95 Newton per mm square, मतलब maximum stress कितना हो सकता है? Maximum stress can be 95 Newton per mm square. मतलब that means your stress should always be less than or equal to, or you can write stress should not be greater than 95 Newton per mm square. Okay, so what we have to find? To find dia of steel bar. Okay, इसके लिए हम पहले एरिया फाइंड करना होगा. एरिया फाइंड करने के बाद वी कैन फाइंड आउट डायमीटर. तो लेट मी टेल यू, हमें सिग्मा दिया हुआ है, हमें पी दिया हुआ है. तो वी नो स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. सो व्हाट इज योर स्ट्रेस? लाइक यू कैन राइट पी अपॉन पाई बाय 4 डी स्क्वायर. उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द डाया ऑफ स्टील बार, मतलब सर्कुलर बार है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर. तो देयरफॉर पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन ए. सॉरी, लेट अस रीराइट इट अगेन. So d square, we can write that d square is equal to p by this pi by 4 as it is into sigma, right? So this we can write this as 4p upon pi into sigma. So what is p? P is 4000 Newton upon pi into what is your maximum stress allowed? 95. Therefore if you solve this, you will get d square is equal to 53.61. Therefore d is equal to under root of 53.61 and you can get it as 7.32 mm. Okay, so this should be your minimum diameter to get the stress should not exceed by 95 Newton per mm square. What is your third? Let us go to a third example. Find the Young's modulus E of a brass rod of length 250 mm and diameter 25 mm, which is subjected to a tensile load of 50 kilonewton when the extension of rod is 0.3 mm. तो भैया what is your given data? Again same चीज़ों पे revolve हो रहा है ये चीज़. What is your given? We have to find E. What they have given is length is equal to 250 mm
and the diameter of the bar is 25 mm. The tensile load, that is P, is equal to 50 kilonewton is applied, and the extension, that is delta L, is 0.3 mm. So what you can find from this is area. Area is pi by 4 d square, because they are told brass rod, circular rod. So pi by 4 into 25 ka square, right? So you can get the area from here, which is 490.87 mm square, right? So now you can solve the solution. Sum is like, you can write the formula for delta L, that is equal to PL upon AE, right? What is your what we want to find is E. E is nothing but PL upon A into delta L. So what is your P? 50 into 10 to the power 3. L is equal to 250 mm. So everything should be in mm, newtons and mm. Okay, so what is area is 490.87 into delta L is your 0.3 mm. If you solve this one, you should get the answer something like this: 84882.6 Newton per mm square. And now you can write it as, if you just write it 84.882 into 10 to the power 3 Newton per mm square. Can we write it like this? Yes. So what does this mean? If you write it, and if you want to convert, now this is Newton per mm square, right? So this is Newton per mm square. So simply what you can do is, if you want to write it as, let us write 882 to 10 to the power 3. If I multiply this by 10 to the power minus 6 in the denominator, this will become meter square, this becomes Newton. So if you solve this one, 6 goes up and plus 3, and that is 9. So 84.882 into 10 to the power 9 Newton per meter square, and Newton per meter square is nothing but Pascal. So you can write it as 84.882, and 10 to the power 9 means giga, so giga pascals. So E is nothing but 84.882 gigapascals. Okay, let us move on to our fourth problem quickly. So this is nothing but, see, there is a sections which looks something like this. Okay, okay, and this is the one side we are seeing. This is a rod, this is a hollow section. You can say it is a pipe kind of section. Okay, it is a pipe like section. It is a pipe like section. Okay, अभी इस पे क्या हो रहा है? We are applying some force P. We are applying some force P from both the sides, a tensile force P. Okay, which is equal to 1.9 mega Newton. What is mega Newton? Is 10 to the power 6 Newton. That means 1.9 into 10 to the power 6 Newton. Nothing else. What is the external diameter? The external diameter is 200 mm. What is the internal diameter? Internal diameter is that we have to find. So what is the internal diameter? We have to find. Okay, and they have given that the working stress for this bar, that is sigma, is 120 Newton per mm square, and so what we have to find is the D. Okay, so the stress they have given. So what will be the area of this hollow section? If your section is hollow, let me draw the section here. Okay, the cross section. If your cross section is okay, if your cross section looks something like this, and this is your outer diameter, that is capital D,
and if your inner diameter, that is this one, let us call it as small d. So what will be the area? The area will be equal to pi by 4, but outer diameter, external diameter minus internal diameter का, like external diameter square minus internal diameter square. Okay, so let me tell you, the sigma is nothing but force upon area. What we want to find is internal diameter. So let us take area on this side, P, and sigma on this side. So what is your P? P upon, so let us write in this way. What is your area? Pi by 4 capital D square minus small d square is equal to P upon sigma. Let us put in all the values. Pi by 4 into, what is capital D is 200 mm. 200 square minus small d square is equal to, what is P? P is nothing but 1.9 into 10 to the power 6 newtons upon, what is the stress is 120 Newton per mm square. If you solve this, you will get the answer for your D. So this should come out to be as 200 square minus D square is equal to, if pi by 4 goes there and if you solve that, you will get the something like 20159.626, and therefore D square is equal to 19840.37, and this will give you the D as 140.86 mm. Okay, so that is your answer. The internal diameter should be 140.86 Newton per mm, mm. Okay, so this was about the some of the very simple problems in this chapter. Let us try now the varying sections ke problem. Let us have bars in a series, and let us look at the question number 5. A stepped bar is subjected to 35 kilonewton axial load. Okay, find the maximum and minimum stress in the section. तो section कैसे दिख रहा है? Let me tell you, or let me show you. This is a section. Okay, and tapered bar, we call it as a varying section. Okay, this is something like this. Okay, and this part is fixed. This part is fixed. So what is the diameter? So the diameter of this bar and the diameter of this bar. So diameter of this bar is 3 centimeter diameter, and this one is 2 centimeter diameter. So the diagram is not to scale. इस पे कौन सा फोर्स अप्लाई किया है? The force applied is compressive force. So compression 35 kilonewton is applied. Okay, 35 kilonewton of compressive force is applied. ठीक है. So what is given data? What we have to find is find maximum and minimum stress. Okay, so the solution, let us look at the solution. First, what is given? Given is the P is equal to, see, this force is compressive or tensile force. देखो, जब भी, if this is a section, if you are applying a force away from the section, that is nothing but tension or tensile force, and if this force is going towards the section, that is compression. Okay, अगर force towards the section जा रहा है, that is compressive force, and away from the sections जा रहे हैं, तो that is tensile force. Okay, तो यहाँ पे the force is going towards the section, and we denote the tension force by plus sign and compression force by negative sign. This is purely our assumption or our convention. You can assume compression as positive and tension as negative. कॉम्प्रेशन को भी पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हो, बट अगर तुमने कॉम्प्रेशन को पॉजिटिव कंसिडर किया
तो टेंशन को निगेटिव कंसिडर करना होगा। ओके, तो दोनों को कोई तो भी एक ही फॉलो करना है, तो विल फॉलो टेंशन को पॉजिटिव, कंप्रेशन को नेगेटिव। तो व्हाट इज पी? पी इज नथिंग बट -35 किलो न्यूटन। माइनस क्यों आया? बिकॉज इट इज कंप्रेशन। ओके, व्हाट एल्स इज गिवन? Diameter is given, diameter 1, let us call this as 1 and this as 2. So diameter 1 is 3 centimeter, that is nothing but 30 mm, right? तो इसका एरिया we can find A1 is equal to pi by 4 D1 square. If you solve it, you will get the area as 225 pi. D2 will be 2 centimeter, that is 20 mm. अगर उसका एरिया फाइंड करेंगे तो A2 पाई बाई 4 D2 स्क्वायर, mm में निकाल रहा है, सो एरिया इज mm स्क्वायर एंड दिस एरिया विल कम आउट टू बी एज 100 पाई mm स्क्वायर। अच्छा, तो हमें क्या बोला है? मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मिनिमम स्ट्रेस। सी द एरिया इन बोथ द सेक्शंस इज डिफरेंट। व्हाट इज योर स्ट्रेस? लेट अस फाइंड आउट द सॉल्यूशन। पहले तो हम मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस की बात जो है वो बाद में करते हैं, बट पहली चीज़ क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस तो हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया है। अभी मुझे बोलो सेक्शन 1 में इफ़ यू फाइंड, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में 35 किलो न्यूटन आ रहा है, बिकॉज देयर इज़ नथिंग न्यू फोर्स, कुछ आ नहीं रहा है, सो बोथ ऑफ देम हैव 35 किलो न्यूटन। अगर 35 किलो न्यूटन आ रहा है बट द एरिया इज़ डिफरेंट, तो जिसमें एरिया, सो कैन यू सी इफ़ द पी इज़ कॉन्स्टेंट, इफ़ पी इज़ कॉन्स्टेंट, कैन यू से स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया? अगर P कांस्टेंट है तो कैन यू से स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया? व्हाट डज दिस मीन? अगर एरिया बढ़ता है तो स्ट्रेस क्या होगा? कम होगा। अगर एरिया कम होता है तो स्ट्रेस क्या होगा? बढ़ेगा। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एक सेक्शन में कम स्ट्रेस आएगा, एक सेक्शन में ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। दोनों में स्ट्रेस कैसे आएंगे? कम ज़्यादा आएंगे। तो देखते हैं P1। तो लेट अस से सिग्मा 1, स्ट्रेस सिग्मा 1 मतलब P अपॉन A1। तो देयरफॉर सिग्मा 1 इज इक्वल टू व्हाट इज फोर्स योर 35 किलो न्यूटन। सो 35 वी कैन राइट माइनस 35 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन एरिया वॉज 225 पाई। So if we solve this, it will come out to be as 49.52 Newton per mm square. Newton per mm square मतलब MPa. But you can write why this is minus, because the stress is compressive stress. So we can write 49.52 MPa and in bracket we can write compressive force, compressive stress. Okay. So and sigma 2 if you find, that is P upon A2. अगर व्हाट इज P? -35 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 100 पाई। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो you'll get out as 111.41 मेगा पास्कल्स, दैट इज नथिंग बट 111.41 मेगा पास्कल्स टेंसाइल फोर्स। ओके, सॉरी नॉट टेंसाइल, इट इज ऑल्सो कॉम्प्रेशन, माइनस इज कॉम्प्रेशन, सो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ओके, so which one is greater now? Which stress is greater, 49.52 or 111.41? So amma, this is minimum stress, this is maximum stress. Okay भैया, हा जो आहे that is maximum stress and this one is minimum stress. तो what is your conclusion? अगर area is inversely proportional, मतलब if area is more you should get stress less, if area is less you should get more stress. मतलब smaller section, can you now tell me without seeing the answer, larger section में कम stress रहेगा, smaller section में ज़्यादा stress रहेगा। तो sigma 1 should be lesser, sigma 1 is lesser, sigma minimum, sigma 2 is more, that is sigma maximum. Okay, that is your answer. So I think that is enough for this one. So what we can do is we can stop here. Next lecture में what we are going to see is the bars with varying sections. The next lecture is going to be bars with varying section, and if you like this lecture, do subscribe our YouTube channel, SuryaNayan Institute of Engineering. Okay, and if you want to purchase this course, which is complete course is covered on our app, that is
The app name itself is SuryaNayan. It is available on Play Store as well as on App Store. Apple App Store, if you want to install it from Apple App Store, you go and download the My Institute app, okay, from Apple iPhone users, and put our org code. Org code क्या है? Org code is QEBACV. Okay, if you put this course, you can log in on our app. And the other option is your web portal. Website is www.suryanayaninstitute.com. okay, and you can go purchase. This link is there in description. Okay, all the links are there in the description, and you can purchase this course from this one. Okay, and if you are from a city Jalgaon in Maharashtra, you can come and join it offline in Vidyut Colony. Okay, you can contact me and we can schedule. You can join the current running batch of strength of material. Okay, thank you very much. See you again in your next lecture.